Good morning, students. This is your teacher Neelam Mehlawat, and we will continue our chapter that is body fluids and circulation. I hope you were waiting for me. And yes, and you are ready with your books and notebooks? Shall we start? Okay. So, dear students, this is our lecture number 2, and today we'll be talking about a very, very interesting topic, that is the blood groups. Have you heard this name, dear students? Yes. Okay, good. See, there are various types of groupings of blood that have been done so far. We'll talk about the 2 famous blood groupings, such as the first is your ABO blood group and second is Rh negative or Rh positive blood group. Right? These are 2 blood groups that are widely used all over the world. So first of all, we'll talk about the ABO blood group. Okay, we know as per the ABO blood group. Now this ABO blood grouping is based on the presence or absence of 2 surface antigens. And these 2 surface antigens, they are present on the RBC. What is RBC, dear students? Red blood cells. Okay. So we have 4 different types of blood groups, right? Depending upon the distributions of antigen and the antibodies. So we have a blood group A, blood group B, blood group AB and the O blood group. So we have 4 different types of blood group. In ABO blood grouping, we have how many types of? 4 different types of blood group, right? Now ABO blood group, as I told you, it is based on the presence of 2 surface antigens, and these surface antigens, that is A and B, they are only present on the surface of the RBC. Now, dear students, antigens are basically that can induce immune response. But these antigens, they are self antigens. Okay, they are expressed on the surface of red blood cells, but they are you can say the self antigens. Okay, they will be expressed on the surface of RBC. Okay. So, and the plasma contains 2 different types of antibodies. Okay, so on the RBC, the glycoprotein will be expressed, or you can say the antigen will be expressed, and the plasma will contain the natural antibodies. Clear? So antibodies, they are produced in response to the antigens. Okay, but your the antigens which will be present on the surface of RBC, they are surface antigens, right everyone? They are surface antigens. Okay, now why do we talk about the blood groups? What is the importance of these blood groups? Why we need to talk about, why we need to understand these different types of blood groups? See, during the blood transfusion, we must have observed that a doctor, he carefully matches the blood of a recipient before any blood transfusion can occur. Isn't it? हमने देखा है कि डॉक्टर्स जो हैं जब इंसान ब्लड डोनेट करता है तो वो पेशेंट के साथ मैच करके देखते हैं whether it is compatible with the blood or not. If it is compatible, only then that blood can be given to the you can say the patient. Okay, so donor compatibility is always checked before, it's always matched with the patient before it can be given to the you can say the patient. So donors and the patient compatibility is always matched, dear. Okay, everyone. So suppose if there is a person A and he is a patient and he receives a blood. Then, and suppose there is another person who's B and he is a donor, he will give the blood. So A and B, they should be compatible. Their blood group should be compatible. Only then the B blood group can be given to the blood of the B person can be given to the A person. Now let's see what is this compatibility all about. Now, as I told you, as I told you that there are 4 different types of groups. Your A blood group, B blood group, AB blood group and the O blood group. Okay, everyone? And I assume that you understand you're understanding the ABO blood group so far? Okay. Now let's come to the red blood cells. Now if the person has a blood group A, then on the RBC there is a glycoprotein which of A will be expressed. Okay, RBC है, RBC के surface पे जो है A एंटीजन एक्सप्रेस हो जाएगा. ठीक है.
अगर हमारा ब्लड ग्रुप बी है तो आरबीसी के सरफेस पर बी एक्सप्रेस हो जाएगा. ये ए और बी कुछ नहीं है, बट दे आर अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ शुगर्स. ओके, सो अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो आपके आरबीसी के सरफेस पर एक शुगर ए शुगर विल बी एक्सप्रेस्ड, एंड दिस ए शुगर इज नथिंग बट इट इज अ एंटीजन. एंटीजन मीन्स इट इज अ सेल्फ एंटीजन. ओके, सेल्फ एंटीजन. क्लियर? मीन्स योर इम्यून सिस्टम विल नॉट फाइट विद इट. आपका इम्यून सिस्टम जो है वो सेल्फ और नॉन सेल्फ में आइडेंटिफाई करता है. तो आपका इम्यून सिस्टम इन आरबीसी को अटैक नहीं करेगा क्योंकि वो ए को आइडेंटिफाई करेगा सेल्फ एंटीजन. ओके, सेम वे अ पर्सन विच इज हैविंग द ब्लड ग्रुप बी विल हैव the B antigen on the surface of the red blood cells. If you are having a blood group AB, then both A and B will be expressed on the surface of the red blood cells. And if you are having a blood group O, then blood group O means there is no antigen at all. So there are no surface antigens, right? There are no surface antigens which are present on the RBC. So these are present, your surface antigens, or you can say the self antigens, they are expressed on RBC. Okay, and your antibodies, they are present in the plasma. So where are antibodies present? The antibodies, they are present in the plasma, and the surface antigen, or you can say the self antigens, they are expressed on the surface of the RBC. So in the plasma, antibodies will be made. देखिए, अगर रेड ब्लड सेल के सरफेस पर ए है तो इसके अपोजिट एंटीबॉडीज हमारे प्लाज्मा में होंगी, यानी दे विल फाइट विद बी. ठीक है, दे विल फाइट विद बी शुगर. ओके, जैसे कि यहाँ पे बी एक्सप्रेस हो रहा है तो ये इसके खिलाफ एंटी होंगे. तो अगर हमारा ब्लड ग्रुप ए है तो हमारे प्लाज्मा में बी एंटीबॉडीज होंगी, बी के अगेंस्ट एंटीबॉडीज होंगी. इफ अ पर्सन हैज़ बी ब्लड ग्रुप देन उसके प्लाज्मा में ए के एंटीबॉडीज़ होंगी, ए के अपोजिट. लेकिन अगर हमारा ब्लड ग्रुप ए बी है तो हमारे प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडीज़ नहीं होंगी. ओके, हमारे प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी. मीन्स ए बी पर्सन कैन बी गिवन एनी ब्लड ग्रुप. ओके, जो ए बी पर्सन है वो किसी का भी ब्लड ले सकता है. दैट इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल रिसिपिएंट. इस पर्सन को जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है, इसे किसी भी इंसान का ब्लड ग्रुप दिया जा सकता है. क्लियर? बिकॉज इट डज नॉट हैव एनी एंटीबॉडी. ठीक है, ये एंटीबॉडीज इसके पास नहीं है किसी भी ब्लड ग्रुप के खिलाफ. सेकेंड, लास्ट केस, हियर देयर इज नो एंटीजन. यहाँ पर जो है सरफेस एंटीजन नहीं है आरबीसी के पास, तो इसके खिलाफ दिस पर्सन विल हैव एंटीबॉडीज अगेंस्ट ए ऑल्सो एंड बी ऑल्सो. ठीक है, सो दिस इज अ यूनिवर्सल डोनर. ये डोनर होगा लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता क्योंकि इसके ब्लड में ए और बी दोनों के खिलाफ एंटीबॉडीज मौजूद हैं. तो अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है तो हम इसे ए ही ब्लड ग्रुप का ब्लड दे सकते हैं. अगर हम उसे ब्लड ग्रुप बी देंगे तो ये जो एंटीबॉडीज हैं दे विल फाइट विद दैट एंड दैट ब्लड विल नॉट बी कंपैटिबल विद दैट ऑफ द पेशेंट. सेम वे यहाँ पर भी, यहाँ पर हम सिर्फ बी ब्लड ग्रुप का ब्लड ग्रुप दे सकते हैं उस इंसान को. ए बी को हम किसी का भी दे सकते हैं क्योंकि एंटीबॉडीज़ नहीं है. ओ को हम सिर्फ ओ का दे सकते हैं. ठीक है, बिकॉज इसके ब्लड में ए और बी दोनों के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं. सो हमारा जो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है दैट इज़ ए बी. ए बी, द पर्सन्स विद ए बी ब्लड ग्रुप, they can accept blood from persons with AB as well as from the other blood groups also. They can take blood from any person, from any blood group. So they are referred to as universal recipient. While O blood group persons, they are referred to as universal donors. They can give blood to anybody. Okay, they can give blood to anybody. Clear? So O, a person which is having the O blood group, that is called a universal donor. And the person having a AB blood group is called universal recipient. Now a person with blood group O, as I told you, he is considered to be the universal donor, while a person with blood group AB is considered a universal recipient. जिन लोगों का ब्लड ग्रुप AB होता है वो किसी से भी ब्लड ले सकते हैं. जिनका ब्लड ग्रुप O होता है वो किसी को भी ब्लड दे सकते हैं.
सो बोथ ब्लड ग्रुप्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, लेकिन जिनका ब्लड ग्रुप ए है वो सिर्फ ए ब्लड ग्रुप को ही अपना ब्लड दे सकते हैं या ए से ही ले सकते हैं. ठीक है, क्लियर है. और बी जो है वो सिर्फ बी वालों को दे सकते हैं. ओके, सो ए बी इज़ अ यूनिवर्सल रिसिपिएंट एंड ओ इज़ अ यूनिवर्सल डोनर. सो ओ ब्लड ग्रुप किसी को भी दिया जा सकता है. ओ ब्लड ग्रुप आप ए वाले को भी दे सकते हो, ओ ब्लड ग्रुप आप बी वाले को भी दे सकते हो. सो अ पर्सन विच इज़ हैविंग ब्लड ग्रुप ओ कैन गिव ब्लड टू ऑल दी individuals. Then comes your second grouping, which is called RH grouping. Okay, this is another antigen, that is RH antigen. Clear? And it is similar to the one which is present in rhesus monkey. Okay, this is a variety of monkeys, rhesus monkeys, and it is observed in the surface of RBC. You can say nearly in 80% of the humans, they are RH positive, means they contain this factor and they are RH positive. A person who do not have RH antigen is called RH negative. Let's understand it with the help of a diagram. Suppose this is your RBC. Okay, ये भी एक तरीके का प्रोटीन है. RH is also a type of protein. अगर ये आपके RBC के सरफेस पर प्रेजेंट है सो वी आर RH पॉजिटिव. अगर ये RBC के सरफेस पे नहीं प्रेजेंट है सो वी आर RH नेगेटिव. क्लियर? I hope this is clear to everyone. So 80% of the people have RH factor. ठीक है, 80% जो लोग हैं उनके पास ये RH फैक्टर होता है, यानी ज़्यादातर लोग RH पॉजिटिव होते हैं. एंड 20% of people they are RH negative. Okay, 20% of the people they are RH negative. Clear everyone? I hope this is clear. Okay. So a RH negative person when it is exposed to RH positive person, suppose करिए एक इंसान है वो RH नेगेटिव है और उसको हमने RH पॉजिटिव का ब्लड दे दिया तो क्या होगा? What will happen? RH नेगेटिव है, उसे हमने RH पॉजिटिव का ब्लड दे दिया है. What will happen? So this will form antibodies against the RH factor. ठीक है? Let's understand this again. If a RH negative person is exposed to RH positive blood, एक इंसान है वो RH नेगेटिव है, उसको हमने RH पॉजिटिव ब्लड के से एक्सपोज कर दिया तो अब क्या होगा? उसके ब्लड में RH एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बन जाएंगी. ठीक है, ये इंसान है RH नेगेटिव, इसको हमने क्या दे दिया? RH पॉजिटिव ब्लड दे दिया. तो अब इसकी बॉडी में क्या होगा? एंटीबॉडीज़ बन जाएंगी. किसके अगेंस्ट? RH पॉजिटिव के अगेंस्ट. ठीक है, तो इसीलिए वेन एवर द ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स हैव टू बी डन, हमें RH फैक्टर चेक करना होता है. तो हम बिना मैच किए किसी को भी ब्लड डोनेट नहीं कर सकते. सो बोथ दीज फैक्टर्स दे आर मैच्ड, RH फैक्टर ऑल्सो एंड योर ब्लड ग्रुप्स ऑल्सो. क्लियर? अब सपोज करो अगर नहीं मैच करते हैं तो क्या होता है? लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. अगर RH इनकम्पैटिबिलिटी हो जाती है तो क्या होगा? So we are taking a case where RH incompatibility has occurred in the fetus and the mother. We are taking a very special case and this special case is very very important. अब suppose करिए जो मदर है, okay, मदर है वो RH नेगेटिव है. Two people, let's suppose there is A and B. Okay, she is RH negative and the father is RH positive. ठीक है, दो लोग आपस में शादी करते हैं. जो मदर है वो RH नेगेटिव है, जो फादर है वो RH पॉजिटिव है. एंड द फीमेल शी कंसीव्स. ठीक है, शी बिकम्स प्रेग्नेंट एंड शी कंसीव्स. नाउ व्हाट हैपन्स? शी हरसेल्फ इज RH नेगेटिव, उसकी बॉडी के अंदर RH नेगेटिव है, लेकिन सिंस शी इज़ कैरिंग अ चाइल्ड एंड शी हैज़ नाउ बिकम एक्सपोज टू RH पॉजिटिव, तो उसकी बॉडी में क्या होगा? एंटीबॉडीज़ बन जाएंगी. ठीक है, इस A में क्या हो जाएगा? एंटीबॉडीज़ बन जाएंगे. किसके अगेंस्ट? RH पॉजिटिव के अगेंस्ट. ठीक है, नाउ हर फर्स्ट डिलीवरी विल बी नॉर्मल. ओके, क्योंकि RH इस फीमेल को एक्सपोज होने में इतना टाइम लग जाएगा कि उसकी फर्स्ट डिलीवरी नॉर्मल हो जाएगी. ठीक है,
Now when she will conceive the second child, okay, when she will conceive the second child, यानी इन केस ऑफ सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी, एक बच्चे के पैदा होने के बाद, अब नेक्स्ट टाइम व्हेन शी विल बी प्रेग्नेंट, सो दीज एंटीबॉडीज दे विल फाइट विद, और दे कुड बी फेटल टू द फीटस. ठीक है. अब ये जो एंटीबॉडीज उसकी बॉडी में बन गई हैं, ये दे विल फाइट, और यू कैन से these RH antibodies from the mother, they will leak into the blood of the fetus. अब when she is carrying a second child, तो ये antibodies जो है बच्चे के अंदर चली जाएंगी and they will destroy the RBC of the child. ये बच्चे के RBC को ख़त्म कर देंगी. ठीक है. As I said, first pregnancy normal हो जाएगी. Second pregnancy अगर if she conceives, तो अब मदर की बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ हैं, and now if she conceives, सो क्या होगा, ये जो एंटीबॉडीज़ उसके ब्लड में है ये बच्चे के अंदर जाएंगी और बच्चे के आरबीसी को फिनिश कर देंगी, डिस्ट्रॉय कर देंगी, एंड दिस विल कॉज अ सिवियर एनीमिया एंड जॉन्डिस इन द चाइल्ड. तो उस बच्चे में सिवियर एनीमिया हो जाएगा और उसमें जॉन्डिस हो जाएगा. एंड दिस कंडीशन इज मेडिकली नोन एज इरेथ्रोब्लास्टिस फीटालिस. ये जो कंडीशन है इसे हम मेडिकली कहते हैं इरेथ्रोब्लास्टिस फीटालिस. ठीक है. फर्स्ट प्रेगनेंसी विल बी नॉर्मल. इन केस ऑफ सेकेंड प्रेगनेंसी दिस विल हैपन. सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, एनी. ओके. सो इन केस ऑफ सेकेंड प्रेगनेंसी दिस विल हैपन that the antibodies which are present in the mother, they will fight, they will leak into the fetus blood, and they will destroy the fetal RBCs, and this will cause the severe anemia and jaundice, and we call this condition as erythroblastosis fetalis. Okay. But this condition can be avoided. How we can avoid this condition? We can give anti-RH antibodies injection to the mother. अगर ऐसी मदर प्रेग्नेंट होती हैं सेकेंड टाइम, तो उन्हें प्रेगनेंसी के दौरान एक इंजेक्शन, डॉक्टर से कंसल्ट करके एक इंजेक्शन लगवाना होता है, एंड दैट इज़ anti-RH एंटीबॉडीज़ इंजेक्शन. ओके. सो जैसे ही फर्स्ट बच्चे की डिलीवरी होती है उसके जस्ट बाद, इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड, दिस इंजेक्शन इज़ गिवन. नाउ एज आई टोल्ड यू डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ पॉसिबल ओनली इफ बोथ द पेरेंट्स दे आर अवेयर ऑफ द RH पॉजिटिव एंड द RH नेगेटिव. अगर उन्हें ब्लड ग्रुपिंग के बारे में अवेयरनेस है, RH ग्रुपिंग के बारे में अवेयरनेस है, सो ओनली देन दिस condition can be avoided. Okay, only then this condition can be avoided by the couple, right? Because at the very basic level, this is their responsibility. Clear, everyone? So we should always be aware regarding the blood grouping system of the mother and the father. Clear, everyone? Okay. Now let's come to the blood clotting. I hope you heard this name. We have been talking this topic from class 10th itself. So clotting. Suppose क्या होता है? Suppose you get a cut. Okay. We are working in the kitchen or somewhere else, and suddenly you get a cut. So blood cells, they start coming out of it, isn't it? And after some time you will observe that a clot has been formed, isn't it? This is exactly what we see. But how this clot formation occurs? This clot formation is nothing but the blood clotting. And how this formation occurs, let's study that. Now first of all, when a tissue is injured, okay, when there is a cut in the body of the either in the finger or in anywhere, so when there is a tissue is injured, there is an injury, then the platelets, they will release the clotting factor. ठीक है. प्लेटलेट्स जो हैं, जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं, and their number is approximately 1,50,000 to 3,50,000. I hope you remember. We have discussed in the last video. So platelets, they are present in the blood. So these platelets, they will release a factor which is called prothrombin. Okay, they will release a prothrombin activator. So when a tissue gets injured, so immediately the platelets, they will release a prothrombin activator and calcium ions. Now this prothrombin activator factor, it will activate the thrombin. Okay, this will activate the thrombin.
Now thrombin will further activate the fibrinogen and fibrinogen will be converted into fibrin. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने थ्रोम्बिन को एक्टिवेट किया. थ्रोम्बिन ने एक और प्रोटीन को एक्टिवेट किया विच इज कॉल्ड फाइब्रिनोजन एंड फाइब्रिनोजन विल बी कन्वर्टेड इनटू फाइब्रिन. Okay, fibrinogen will be converted into fibrin, right? Now these fibrin, they will form a mash structure, mash-like structure. As you can see, they will form a fibrin. They will form a fibrin fibers, which will form a mash-like structure over the wound. तो ये एक जाल सा बना देंगे आपके कट पोर्शन पर, जहाँ पर भी आपको कट लगा है वहाँ पर एक जाल बनाएंगे so that they can trap the flowing red blood cells. Okay. And the bleeding will stop and this clot will later become hardened and become smaller and smaller. और ये जो clot है ये धीरे धीरे hard होता जाएगा, right? This clot will become hard and become smaller and smaller. Okay everyone? Now there is an enzyme which is involved in this process and that enzyme is thrombokinase. Okay, which is the enzyme? Thrombokinase. Thrombokinase. This is the enzyme which is involved in this process and this thrombokinase, this will activate the various factors. Okay, so whenever there is an injury, that will stimulate the platelets in the blood to release certain factors and the mechanism of coagulation will start. Clear? And the calciums, they play a very important role in this process. So calcium ions, they play a very important role in the clotting process. Okay. Now, as this clot becomes smaller and smaller, so new cells, they will grow and they will repair the wound site. And there is an enzyme which is called plasmin that is released, that will dissolve the clot. तो ठीक है, धीरे धीरे वक्त के साथ क्या हुआ कि आपके नए सेल्स बनेंगे. प्लाज्मिन एक एंजाइम है जो आपके क्लॉट को रिमूव कर देगा और वहाँ पर नई स्किन आ जाएगी, नई लेयर आ जाएगी. क्लियर? सो दिस इज हाउ योर ब्लड क्लॉटिंग फंक्शंस. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. Okay, so let's I'm again repeating it. So inactive fibrinogen is present in the plasma. So it is converted by the thrombin into active fibrin, and thrombin is formed by inactive prothrombin. So prothrombin is first activated and converted into thrombin. Then thrombin will activate fibrinogen and convert it into fibrin, and fibrin will then form the mash-like structure which will prevent or which will form the covering over the clot. And as I told you, calcium ions, they are very, very important. Okay. Then there is a disease which is called hemophilia. Now hemophilia is a disorder which prevents blood clotting. ये एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती है. तो अगर आपको छोटा सा भी कट लग जाता है तो कॉन्टीन्यूसली द ब्लड विल कीप ऑन फ्लोइंग बिकॉज आपकी बॉडी में प्लेटलेट्स की कमी होती है. एंड द हीमोफिलिक पीपल, दे डू नॉट हैव सफिशिएंट प्लेटलेट्स सो दैट दे कैन स्टॉप द फ्लो ऑफ ब्लड. द पीपल हु हैव हीमोफीलिया, their blood cannot have sufficient platelets and blood clotting cannot occur in these people. So the person suffering from hemophilia, they are always at a risk of blood loss in case of injury. तो अगर ऐसे लोगों को छोटा सा भी कट लग जाता है तो वहाँ पर प्लेटलेट फॉर्मेशन नहीं होती है, वहाँ पर क्लॉट की फॉर्मेशन नहीं होती है एंड द ब्लड विल कीप फ्लोइंग. सो दिस इज़ अ वेरी डेंजरस सिचुएशन, डेंजरस डिजीज़ फॉर दोज पीपल, राइट? So coming to your homework, dear student, first of all, you will make notes of this topic, right? You will make notes of this topic. And secondly, you will read the page numbers 280 and 281. And if there is any doubt, students, you will talk to me. Just read each line of your NCERT. Your NCERT is the most important. Okay, this is a Bible for you. You don't look here and there. Just read each line of NCERT. That is very, very important. Okay, everyone? Okay, so that's all for today. Bye, everyone.